Okay, we have done questions on the trigonometry sin theta by theta is equal to 1. We have done sufficient question. And let's move. Here this question, limits and tending to infinity, that is this is a different question. It's not undeterminate form, something different, but a good one. Huh? We have limits and tending to infinity, limits and tending to infinite, and I have a term 1 plus x. After that 1 plus x square. After that 1 plus x to the power 4. And the last term I am having 1 plus x to the power 3. Right? We need to prove that it is equal to 1 upon 1 minus x. Okay. Okay. We need to prove that is equal to 1 upon 1 minus x, and it is given that mod x is equal to 1. Okay, tell me how to do it. We could multiply and divide by 1 minus x and then use the a square minus b square property. No, yes. Okay. First thing is that we have variable n is tending to infinite. Okay, x is a constant, and the answer will be in terms of the x. Okay, and we need to prove that is 1 upon 1 minus x, but magnitude of x lies between 1. X is a small number, it's not a large number. Then we can say it is 1 upon 1 minus x. You said correct. So what I'm saying, just multiply with 1 minus x and divide with 1 minus x. Okay, when you multiply with 1 minus x into 1 plus x, these two terms will give you minus 1 minus x square. After that, 1 minus x square plus x square multiplied, you are going to get 1 minus x to the power 4. After that, 1 minus x to the power 4, 1 plus x to the power 4 will multiply, you will get 1 minus x to the power 4. This process will continue. So finally, I will get limits and tending to infinity. I am writing last two terms. I will get 1 minus x to the power 4, and I am writing directly. Okay, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो ये सब मल्टीप्लाई होता जाएगा. बात फॉलो कर लिया ना, ब्लिक के बनाने की जरूरत तो नहीं है. जल्दी बोलिए. हाँ, 1 minus x to the power 4 रहना जाएगा, divided by 1 minus x. I will get this. When limits n is tending to infinite, n के लिए infinite जाएगी, तो ये हमारे पास नंबर जो x होगा वो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 जो भी है, that is smaller than 1. So its power infinite will become 0. So its power infinite will become 0. So I will get it to be 1 upon 1 minus x. That's all. ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? जाक्षित, हाँ, क्लियर? यस सर. ओके. थोड़ा सा तेजी से करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं, ठीक है? एक्सप्लेन करके नहीं बताया, लेकिन ठीक है. You knew it. We have this question: limits extending to 1 upon 1 minus x. Right? Without L hospital, how can we solve? Tell me. L hospital नहीं लगा रहे, कैसे करेंगे? We could take a right hand limit. Right hand limit x to be 1 plus h. Get the answer. ठीक है, छोड़ता हूँ. Okay, take x to be 1 plus x. After that, we need to rationalize the denominator. है? उसको rationalize कर लेंगे, दिखाई पड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. What about this question? Limits extending to infinity. Limits extending to infinite. We have 2x square plus 2x minus sine square x divided by 3x square minus 4x plus cos square x. है? चलिए बताइए कैसे करेंगे? L hospital. L hospital we can apply, but it is going to be lengthy and okay. It's going, okay, because we have different. We have x square, we can differentiate with sine square x. Differentiation little lengthy. Here we have a cos square x. Because sine will become cos. I will not get in the form of sine x by x. Okay, we have a term of cos. Power of x. What? Divide by highest power of x. Highest power of x, we can divide. Okay. But that we do in the polynomial. We have the mixed term. Okay, we are having sin x and cos x also. Trigonometry and algebra, both the terms are there. But anyway, if we divide with that sin x by x, I will get cos x by x. We can proceed.
ठीक है, लेकिन वो हाईएस्ट पावर से तभी डिवाइड करते हैं जब पॉलिनोमियल होती है, मिक्स टर्म होती तो नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे फायदा है इसलिए करा जा सकता है। लेकिन कोई दूसरा टर्म होता है जैसे यहाँ पे log 1 + x लिखा होता या कुछ और लिखा होता तब नहीं कर पाते। ठीक है, अभी फायदा है कि अगर x से डिवाइड कर देंगे तो sin x by x आ जाएगा, दैट इज 1। लेकिन cos x by x आएगा, दैट इज मेकिंग ए प्रॉब्लम। एम आई राइट? Yes, sir. हाँ ठीक है, एक सेकंड। हालांकि cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x करके लिखा जा सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है सब चीजों से। जस्ट वेट ए मिनट, यू आर मिसिंग समथिंग। बार बार मैं प्रूव करके इतना टाइम दे रहा था कि समथिंग यू कैन टेल, यू आर मिसिंग समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यूज इट डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट करना है, यूज। बता रहा हूँ, समथिंग इज नॉट स्ट्राइकिंग योर माइंड, दैट मीन्स you are missing. We have the formula limits extending to 0 sin x by x. That is one. We know it. I'm asking find the limits when limits x tending to infinite and sin x by x. Okay, we need to find its value. Am I right? And I'm giving you another question. Limits extending to infinite. Okay, x into sine of 1 by x. Okay, extending to 0. Extending to 0. I wrote wrong. Huh? Sin 1 by x. We need to find its value. Tell me how to get it. The first one will be 0. You are correct. What about the second one? No, it is. I wrote wrong. बता रहा हूँ गलत लिख दिया मैंने। ये x है, मैंने आंसर लिख दिया था। Okay, it is x into sin 1 by x. The first one is 0. The second one is also 0. Okay, how that I'm telling you. Limits extending to infinity. Limits extending to infinite. Sin x by x. We have the formula that is 1, but only when it is 0. Sin 0 by 0. Both the 0 should be same, then we can write it with 1. But we are having sin infinity by infinity. It is not sin 0 by 0. So I cannot write it 1. So I'm writing in a different manner. I'm writing limits extending to infinity 1 by x multiplied by sine of x. Can we write? Okay. Now the value of the sin x. The value of the sin x I cannot tell when h is tending to infinity, but one thing is sure. One thing is sure, that the value of the sin x will lie between -1 to 1. It may be -1, it may be 1, it may be 1 by 2, it may be -1 by 10, or even it may be 0. It may be any number between -1 to 1. And that is multiplied with 1 by infinity, that is 0. So I can write, I'm writing into the language, I can say that is nothing multiplied by 0 multiplied by a finite number. It is not infinite, a finite number between -1 to 1. Between -1 to 1. Whatever the number we have between -1 to 1, when we multiply it with 0, I will get 0. It is not 0 into infinity. It is 0 multiplied by a number between -1, that will give me 0. So I got a result that limits x tending to infinite, x upon sin x or sin x by x. Just a minute. Sin x divided by x is 0. I got this result. Okay, no problem. No, sir. But हाँ, ये याद रखना है. And come to this part also. ये भी वही चीज लिखी है. There is no difference in the question number 1 and 2. In place of the x, I have written 1 by x. ये 1 by x था, x बन गया, x की जगह 1 by x आ गया. Just see carefully. It is something extending to. Okay, I have written wrong. Extending to 0. X की जगह 1 by x रख दिया है. So that is nothing, that is 0 multiplied by a number between -1 to 1. A number. So that will give me 0.
Is it clear? Yes, sir. हाँ, तो sin x by x 0 बन जाता है जब x tending to infinite होता है. I am going to use that result here in this question. So what I do, I will divide with the x or x square. Okay, so I will get it to be 2 limits x tending to infinite 2 plus 2 by x minus sin square x divided by cos square by x square. The same thing here, 3 minus 4 by x. After that, cos square x divided by x. Now I'm going back again. Okay, just a minute. It is limits extending to infinity sin x by x. In case we have limits extending to infinity, in place of the sin x, suppose we have a cos x by x. In that case, also 1 by x will give me 0 multiplied by cos x. Cos x will lie between -1 to 1, so 0 multiplied by -1 to 1, that will also give me 0. So limits extending to infinity sin x by x or cos x by x, both are 0. So I'm just putting the values here. First term is 2, after that 0, after that 0. Here 3 minus 0 plus 0. This 2 by 3 is my answer. ठीक है? Clear? जक्षित? Sir. चलिए ठीक है. आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. चलिए ठीक है. एक मिनट. ये सब चीजें छोटी छोटी होती है, ध्यान में रहना चाहिए, है ना, इनकी जरूरत ही पड़ जाती है. We have this question. We need to solve it. हाँ, बताइए. We are having limits extending to 0 and we have 27 power x minus 9 power x minus of 3 power x plus 1. Everything divided by root 2 minus of root of 1 plus cos x. है, ये करना है. ठीक है, बताइए कैसे करेंगे. पहली बात तो ये है कि वी कैन गो विद द एल हॉस्पिटल, बट एल हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी लेंथी, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा. वी नीड टू डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करेंगे. ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है. तो आंसर विल कंटेन लॉग टर्म्स. लॉग में रहेगा, ये बात तो पक्की है, बट दैट इज गोइंग टू बी लेंथी. अगर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स है, इट विल बी लेंथी वन. तो हाउ टू प्रोसीड? कैन वी Could we rationalize? rationalize? If we need, we will do later on. Okay, if we need, we will do later on. Okay, but anyway, we can apply a formula that we know. We have a formula, limits e power x minus 1 by x, that I told you, but I didn't tell you this formula. This is also a formula of a की power x, or I have told you, I don't remember, a की power x minus 1 by x. That is log a base e. Am I right? No problem. So we can apply this formula and pay attention. The term that we have, the numerator, is something very common in JEE. ये आता रहता है, होता रहता है. तो इस तरह की चीजें काफी कॉमन है. We can factorize the numerator. इसका इसका पेयर कर दे रहे हैं, इसका इसका पेयर कर दे रहे हैं. I am not writing directly, I am just showing you. Limits x tending to 0. I will take 9 की power x to be common. After that, I am left with 3 की power x minus 1. Minus sign will be there. I am just writing 3 की power x minus 1. Okay, 1 times. After that, root 2 minus root of 1 plus cos x. Okay. Now we can write limits x tending to 0. We have done the factor. 9 power x minus 1 is one factor. But in the formula, I have a की power x minus 1 by x, so I'm writing x again. I will do manipulation afterwards. The next factor is 3 की power x minus 1. I need x, so I'm writing x again here. I have done x into x 2 times, basically x square, so I'm multiplying with the x square, and I'm left with the under root 2 minus of under root of 1 plus cos x. The first term
we can apply the formula. We can apply the formula here. I am facing it difficult. I need to rationalize, or I can do the half angle formula. I can do any of them. Okay. Yes, Anyway, sir. we can proceed, and I'm completing. I will do with the half angle. Oh, anyway, I'm just showing under root 2 minus plus of root of 1 plus cos x. I'm rationalizing. You can use the half angle also. Under root 2 plus under root of 1 plus cos x. Okay. So I have got limits extending to 0. The first term 9 to the power x minus 1 by x. 3 to the power x minus 1 by x. Here x square would be there. If you rationalize, the denominator will be 2 minus 1 plus cos x, basically 1 minus cos x. Am I right? No problem. I will get 1 minus cos x. And here I will get under root 2 plus of root of 1 plus cos x. Okay. Now we can use the half angle formula here. And as I told you, its value is 1 by 2. 1 minus cos x upon x square is 1 by 2. It will come 2. If I use the half angle formula, its value will come to. I'm writing directly. Directly there. The first one will become log 9. The second one will become log of 3. And the third one I will get 2. And the last term I will get 2 root 2. Root 2 plus root 2. That is 2 root 2 extending to 0. So 4 root 2. I am getting. It is log 9. Log 9 I can write 2 into log 3. And after that, we are left with the term of log 3. So basically 4 into 2, that is 8. 8 root 2, log 3 2 times. So I say it is log 3 whole square. That is my answer. Clear? Yes, Yes, sir. sir. तो दिक्कत तो नहीं है. ये तो सीधे सीधे मैंने डायरेक्ट लिख दिया. इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, we have done this many times. As I told you, many people keep this remember. We have a formula 1 minus cos x upon x square is 1 by 2. We can write it directly. Otherwise, half angle कर दी अपने आप ही आ जाएगा. Let's move to the next one. We have this question. Tell me. You are having the answer does not exist. Okay. Just a bit. How? That I'm telling you, it's a good question, logical question. We don't have any formula. It's not existing. Limits extending to 0. We are having sine inverse x into sec x. Okay. No problem. In case we are not having extending to 0, I am having x is equal to 0. Okay. Just a minute. I'm just putting it to be x is equal to 0. Then I'm going to get sine inverse of sec of 0. Sec 0, okay, is 1. So I'm getting sine inverse 1 and its value is pi by 2. Okay, when x is 0. Okay, I'm not writing limits extending to 0. When x is 0, I will get this result. When x is 0. But x is not 0, x is tending to 0. X is a little more than x, more than 0 or a little less than 0. Okay. But when we are having limits extending to 0 sine inverse of sec x. Pay attention that term inside the bracket, that is sec x. Its value. X is not 0, it is tending to 0. So its value will be sec theta is always greater than 1 or less than minus 1. The value of this term is either greater than 1 Domain of sine inverse. or it is less than 1. Am I right? Yes, बात फॉलो किया है. तो सर्किल के अंदर जो भी टर्म है वो 1 नहीं आएगी. 1 तो तब आएगी जब x की वैल्यू 0 होगी. बट x की वैल्यू 0 नहीं है तो 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी. -1 लेस देन -1. ठीक है ना. वो तो डिपेंड करेगा कि x पॉजिटिव या नेगेटिव है. उसके ऊपर सब करेंगे. वो सब छोड़िए, उससे कोई मतलब ही नहीं है. ओके. जब हमारे पास ब्रैकेट की टर्म 1 से बड़ी आ जाएगी, देन आई कैन नॉट कैलकुलेट साइन इनवर्स. आई कैन कैलकुलेट साइन इनवर्स ओनली व्हेन x lies between -1 to 1, but it is greater than 1 or less than -1. So I cannot calculate its sine inverse. Got it?
हाँ, नॉट इन द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स, यू आर करेक्ट है, ठीक है सुचिता, आपने सही बोला है. सो it is not into the domain of the sine inverse. So that means it does not exist, or we cannot calculate its value. Either x is greater than 0 or it is less than 0. In both the cases, we cannot calculate sine inverse, or limits or the value does not exist. Clear? Yes, sir. बात फॉलो कर लिया ना? Sir. हाँ वो ठीक है, लॉजिकल है, इसको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते. मैथमेटिकल फॉर्मूला तो वही लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं when something is written relevant. कोई चीज रेलिवेंट लिखी है तो हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे. कोई चीज आर्बिट्री कुछ भी लिख दिया, इररेलेवेंट है, नॉट लॉजिकल है, तो वी कैन नॉट प्रोसीड. ओके, एनीवे लेट्स मूव. दिस क्वेश्चन वी कैन डू, बट आई विल डू दिस लेटर ऑन. हाँ, बाद में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे. वी विल डू विद द एल हॉस्पिटल और एनी अदर मेथड. ओके ओके ओके. अच्छा, अभी बता दे रहा हूँ, करा दे रहा हूँ. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. करा दे रहा हूँ, अभी करा दे रहा हूँ. वी हैव मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट it is advisable to do with the L hospital. Just a minute. Limits extending to 0, we have a की power x plus b की power x plus c की power x, everything divided by 3, whole power 2 by x. Okay, let's see in which form it is. If I put x to be 0, a की power 0 is 1, b की power 0 is 1, c की power 0 is 1. Basically the numerator is 3. 3 by 3, that is 1. So basically the term inside the bracket, I am getting 1 power infinity. I am getting this form. ठीक है? And we have many questions based on 1 की power infinity. You have many questions. एक नहीं, बहुत सारे अभी कराएंगे. उसी आर्टिकल, ये मेन आर्टिकल है जिसको मैं ज्यादा करना है. हमें लग रहा है कि आज भी नहीं हो पाएगा. इट्स लेंथी आर्टिकल. कोई बात नहीं, क्लास भी आपकी 1 ही घंटे की होती है, नहीं हो पाएगा 1 घंटे के अंदर. विल एक्सटेंड द टाइम्स. हाँ, बाद में कराएंगे, अभी रुक जाइए. बाद में मैं 1.5 घंटे की क्लास करूंगा. आई नेवर टेक 1 hour क्लास. बट एनीवे, that is in the form of 1 to the power infinity. When we have 1 power infinity type of the question, they are solved by a different method. उनका तरीका दूसरा होता है. 0 by 0, infinity by infinity, infinite minus infinite. All these, we have many methods: rationalization, factorization, formulas, everything is there. But in 1 power infinity, that is a typical one, and we follow a different method. We have a formula for that. I will tell you if I get time today also. But कोई भी क्वेश्चन होता है जो 1 की पावर इन्फिनिटी में लिखा है, या 0 into इन्फाइनाइट लिखा है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा है, वी कैन कन्वर्ट इट. वो कन्वर्ट हो जाता है 0 by 0 के फॉर्म में. देन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल. दैट इज ऑल्सो वन वे. लेकिन to apply the L hospital, we need to convert into 0 by 0 or infinity by infinity. When we have 1 power infinity form, we can convert into 0 by 0 form very easily. Very easily. When it is infinite minus infinite, it may take some time, it may be difficult, but we can convert. ठीक है, लेकिन वो सब छोड़िए. So I am going to convert into L hospital form, after 0 by 0 form or infinity by infinity form. After that I will apply L hospital. How? I am telling you, just a minute. इसका तरीका होता है, तरीका ये होता है, इसको आप y ले लीजिए. Take it y and take log on both sides. I am just showing it is 1 power infinity. Just take log. Log y, if I take, I am getting limits extending to 0, and I will get 2 by x here. I will get log of a की power x plus b की power x plus c की power x divided by 3. ठीक है. Now x is tending to 0. If you put x to be 0, so what you are getting, I am showing you in the numerator. Just a minute. Just a minute. a की power 0 1, b की power 0 1, c की power 0, 3 by 3 log 1 basically 0, and here x is tending to 0. ठीक है. So I am getting into 0 by 0 form. Am I right or not? जल्दी बोलिए. फिर से लिख के बता रहा हूँ. 2 is a constant, take it outside. इसको बाहर निकाल दीजिए तो जल्दी समझ में आएगा. Limits extending to 0, write in this manner. Log of a की power x plus b की power x plus c की power x divided by 3. हाँ, शो कर रहा हूँ, divided by x. Now I am having in the form of 0 by 0. Am I right? No problem.
Now we can apply L hospital. To apply L hospital, we need to differentiate. अब इसको differentiate करने पड़ेगा. न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको differentiate करने में परेशानी आ रही है. So I'm changing it right now. अभी बदल दे रहा हूँ. So log m by n, I can say log is log m minus log n. I'm applying that formula. So I'm writing it is to be log of a की power x plus b की power x plus c की power x minus log 3. Still it is in 0 by 0 form, log 3 minus log 3. Okay, now apply L hospital. So 2 is outside. I'm getting the value of log y. Limits extending to 0. I will differentiate the numerator. Log t will give me 1 by t, that is 1 upon a की power x plus b की power x plus c की power x. After that, if I differentiate, I'm going to get a की power x log a. I will differentiate b की power x, that will give me b की power x log of b. If I differentiate c की power x, I'm getting c की power x log c. Base is E everywhere. Base is E. I'm mentioning base is E everywhere. This is the differentiation of the numerator. Now I need to differentiate the denominator. Okay. If I differentiate the denominator, d by dx of x is 1. Okay. So basically, now I need to put x to be 0. 0 by 0 form got eliminated. I got the answer. I am getting the value of log y. 2 here. If I put x to be 0, y to be 0, c to be 0, a की power 0, 1, b की power 0, 1, c की power 0, basically 1 by 3. 1 by 3. Inside the bracket, I will get a power 0, 1, that is log a plus log b plus log c. Log a plus log b plus log c. We can write it to be log abc. So I have got 2 by 3 log of abc. Am I right? No problem? Yes, sir. This is the value of log y. I need to write the value of y. Just anyway, I'm going to take anti-log. I'm going to change it once again. I am getting the log y is equal to 2 by 3 log ABC. I can say that is nothing log of ABC whole power 2 by 3. Now I can compare, or I can take anti-log, or I can say the value of y is ABC whole power 2 by 3. That we can do. Am I right? जल्दी बोलिए. बात फॉलो कर लिया ना? Yes, sir. हाँ, इसको ध्यान रखिएगा. अच्छी चीज बताइए. ये काम की है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, जिसमें दूसरे फॉर्मूले हैं उससे कराऊंगा. लेकिन कभी कभी वो फॉर्मूले भी फेल हो जाते हैं, नहीं लग पाते हैं, मुश्किल आ जाती है. देन वी नीड टू डू विद एल हॉस्पिटल. लेकिन एल हॉस्पिटल करने के लिए पहले मुझे 1 की पावर इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल लग नहीं पाएगा. लॉग लेके वो 0 by 0 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. टेक इट लॉग एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 0 by 0. देन वी कैन प्रोसीड विद एल हॉस्पिटल. चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, दैट इज लिटिल लेंथी है. जस्ट लीव इट. चलिए आगे बढ़ू. ठीक है. ओके. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? जल्दी बोलिए. हाउ टू सॉल्व इट है? 5 sin x minus 7 sin 2x plus 3 sin 3x upon that. टेल मी. जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए. एक चीज है, वर्बली बता दे रहा हूँ, नहीं से करूंगा नहीं है. जस्ट a minute. We will not do L hospital. It's very lengthy. Sin x is there. Sin 2x. I will like to sin x cos x. Here sin 3x 3 sin x minus cos x. Expansion. हाँ, एक्सपेंशन से हो जाएगा, लेकिन इसमें परेशानी है कि जैसे वो भी राइट है, सही नहीं बोल पा रहे. साइन 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2x का लगा देंगे. आई विल गेट साइन x टर्म कॉमन. ठीक है, वो साइन x की टर्म कॉमन आ जाएगी. इन द डिनोमिनेटर आई हैव साइन x, दे विल गेट कैंसिल. ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. और आफ्टर दैट इन द न्यूमरेटर आई विल गेट समथिंग. चलिए कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कंप्लीट करिए. साइन 2x का फॉर्मूला लिख दिए, साइन 3x का फॉर्मूला लिख दिए. ठीक है. You will get sin x common. After that, one term is easy and we can proceed. Complete करिए फटाक से. अपने आप दिखाई पड़ जाएगा.
हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में स्किप कर जाऊंगा तो 1 की पावर इनफिनिटी आज ही बता दूंगा। हाँ, तभी आज ही बता दूंगा। हाँ जल्दी बोलिए, टाइम लग गया भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ओके, आई एम राइटिंग लिमिट्स x tending to 0. We have 5 sin x minus 7 sin 2x. Sin 2x is 2 sin x cos x. Basically, I will get 14 sin x into cos x. 3 is there. In the sin 3x, we have 3 sin x minus 4 sin qx. I can take sin x common. So I'm taking sin x common. After that, we are left 3 minus 4 sin square x. Am I right? Jaldi boliye. Divided by x square sin x. We can write this way. Am I right? Jaldi boliye. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what happens? What happens? I'm writing directly. Just a minute. I will write. पहले बताया था मैंने भी, कल भी बताया था एक्सटेंडिंग टू 0, लेकिन वो जैक्शित यू आर ज्वाइन टुडे, है आज ही ज्वाइन किया है ना जैक्शित? Yes, sir. फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू राइट इन शॉर्ट। शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखिएगा। आई नेवर राइट ईच एंड एवरी स्टेप, बट फॉर यू आई एम राइटिंग। Thank you, sir. फ्रॉम द होल न्यूमरेटर टेक sin x कॉमन, sin x common. Okay, now just pay attention. Now this time I'm going to write directly 5 sin x, here 3 into 3, 9. 9 sin x plus 5 sin x, that gives me 14 sin x. Okay, and the second term I have a 14 sin x into cos x, so I can say 14 1 minus cos x. This way we can write. After that, 3 into 4, that is 12. Sin square x is left. Can we write this way? Jaldi boliye. Yes, sir. Okay, in the denominator I have a x square sin x. Now this sin x gets cancelled. Now I have two options. Limits x tending to 0. In the numerator, 14 is there. 1 minus cos x is there. Divided by x square. I am splitting into two parts. Minus 12 sin square x I have seen in the numerator. In the denominator is x square. Sin x by x I am getting. For that reason I am separating. There is no other reason for that. But anyway, this time I am going to write answer directly. The 14, as I told you, this value is half. Or otherwise, use half angle formula, rationalize it. You will get its value to be 1/2. Get this remembered. Sometimes it is very useful. Minus 12. So basically, my answer is minus 5. Clear? Yes, sir. Okay, let's Yes. move. Let's Yes, sir. let's move. चलिए सर, जल्दी में शॉर्ट में करना है। Just wait. I am going to tell you 1/1 power infinity form right now. मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन आज करा दूंगा, थोड़े कल हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन we should not make late नहीं करना है। Just a minute. Let me see where to tell you. Just a minute. हाँ, यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ से। आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर्मूला, गेट दिस रिमेंबर, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो सारी क्लासेस में बताते हैं, बट द फॉर्मूला दे टेल इन ए डिफरेंट मैनर। आई एम गोइंग टू टेल यू इन ए बेटर मैनर, जो ज्यादा अच्छा है। जो बताते हैं ये लोग, उसको याद करना है या जो उसमें मुश्किल भी होता है थोड़ा सा। तो वी हैव 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 power infinity form. Okay, I will tell you the formula. Basically, this is a binomial formula. We have a formula, limits I am writing in terms of the n and tending to 0, 1 plus n, whole power n. Okay. This is basically 1 plus x power 1 by x. Binomial, we can expand with the binomial. If you simplify this,
I am having 1 plus 0. It is not 1. It is 1 plus 0, a little more than 1. Power infinite. Okay? It is not 1 to the power infinity. It is 1.001 power infinite. Something like that. 1 to the power infinity is infinity. Is 1. 1 की पावर 1000 इज 1, 1 की पावर 1 लाख कराएंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 करोड़ कराएंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी कराएंगे तब भी 1 आएगा. 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है. लेकिन अगर 1 से बड़ा नंबर है, 1.001 या 1.002 है, देन इस पावर इनफाइनाइट इज नॉट 1, इट इज ई. तब इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू ई आएगी. We have this formula with the binomial के expansion. I will get this derivation. I'm not going to do that. उसको कर नहीं रहा हूँ. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, इरेज कर दूंगा. हाँ, शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, लेकिन आई विल इरेज इट. हाँ, आई विल इरेज इट. आई एम डूइंग डेरिवेशन. लिमिट्स एंड टेंडिंग टू जीरो. लिमिट्स एंड टेंडिंग टू जीरो काम आएगा, फायदा करेगा, इसलिए करा रहा हूँ. विद द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इफ आई डू 1 plus x power n, that is 1 plus nx. 1 plus nx. n is 1 by n, x is n. After that, n minus 1, 1 by n, 1 by n minus 1 divided by 2 factorial into x square, that is n square. After that, I will get 1 by n minus 1, 1 by n minus 2. I'm writing in short, divided by 3 factorial into n cube and so on up to infinity. अब ध्यान से देखिए क्या बन रहा है. The first term I'm getting 1, n by n, that will give me 1 again, and limits we are having, I'm showing you, and tending to 0. After that, if I simplify this term, इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. 1 by n, I will take LCM, 1 minus n divided by n square will get cancelled. So I am left with 1 multiplied by 1 minus n divided by 2 factorial. N square will get cancelled. Similarly, the third term, if I take LCM, I simplify, I am getting 1 into 1 minus n, 1 minus 2n divided by 3 factorial. N cube will get cancelled and so on. If you put n to be 0, you are getting 1. The next one, you are getting 1 upon factorial 1. After that, you are getting 1 upon factorial 2. After that, you are getting 1 upon factorial 3 and so on. So basically, that is e की power x formula. 1 plus x upon factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3. X is 1. So basically, this is the formula for the e. Its value is e. बात फॉलो कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, Yes, sir. हाँ, ये बेसिकली दिस इज द बाइनोमियल फॉर्मूला है. ये बाइनोमियल का ही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है. और इसको डेरिवेशन करा दिए क्योंकि काम आएगा. काम आएगा, पहले भी एक आध बार मैंने कराया है, एक आध क्वेश्चंस में, और अभी नेक्स्ट क्लास में जो है काफी काम आएगा. तो वी नीड टू डू मेनी क्वेश्चन विद द बाइनोमियल. बाइनोमियल के बगैर क्वेश्चन नहीं होता, पहले ही बताया था मैंने. हाँ, लिमिट्स के चैप्टर में बाइनोमियल के बगैर जो टफ क्वेश्चन है वो नहीं होंगे. बाइनोमियल एक्सपेंशन की इंपॉर्टेंस जितना आपने बाइनोमियल चैप्टर 11 में नहीं पढ़ा होगा, उससे ज्यादा इस अकेले चैप्टर में है. ठीक है, बट एनीवे, वी हैव दिस फॉर्मूला. सिमिलरली, आई हैव अनदर फॉर्मूला. लिमिट्स n tending to 0, 1 plus, in place of the n, I am having an, and power is 1 by n. Its value is e power 8. Okay, I am writing the same thing, but in a different manner. n की जगह 1 by n रखने जा रहा हूँ. I am replacing n with 1 by n. The formula 1 will get converted. So I will get limits n tending to infinity. After that, 1 plus 1 by n whole power n. That is also e. ध्यान से देखिए, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 plus 0. 1 by infinity 0, power infinite आएगा. It is the same thing. जैसे पहले लिखा था वही यहाँ पे भी है. There is no difference. Okay, it is the same form, but I have replaced n with 1 by n. 1 and 3 are the same thing. Similarly, I am writing the 2 and 4. They are the same thing. Limits n tending to infinity, 1 plus a by n whole power n is e power a. ठीक है ना? No problem? Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है? हाँ. So what I am saying, all of you please note down this formula. इसको तो फटाक से नोट करिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. बताता हूँ. हाँ, जस्ट नोट इट डाउन. इसको नोट कर लेंगे, इसको यूज करना है, 4-6 प्रॉब्लम कराएंगे. दिस फॉर्मूला गेट रिमेंबर. दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो.
Noted? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब एक चीज का जिसका ध्यान देना है और जो में हमेशा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर, इन ऑल दिस फॉर्मूले आई नीड वन हियर, यहाँ पे वन चाहिए हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल हैव वन, ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे वन होगा। अगर नहीं है तो आइदर आई विल डू +1 -1 और आई विल डिवाइड। क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें लिमिट्स में ऐसे लिखा हुआ था, व्हाट आई रिमेम्बर इट वाज 8 + x, इस तरह की टर्म आई थी। अभी तो कराया परसों नरसों, पावर 1/3 -2। तो आई कैन नॉट डू +1, आई विल +1 -1 कराएंगे तो दिक्कत आएगा, पावर 1/3 है ना, तो दिक्कत आ जाएगा। 8 -1 आ जाएगा तो 7 बन जाएगा, तो 7 के बाद 1/3 दिक्कत आ जाएगी। इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव टेकन, आई हैव टेकन 8 कॉमन, 8 power 1/3, 2 has come outside, after that we are left 1 + x/8 power 1/3 है ना, -2 नीचे कुछ लिखा था, remember? So we need to bring 1। पहली बात तो ये है कि I need 1 here, when most of the time it is given there, no problem, proceed। नहीं है तो either do +1 -1 और take common somehow to get 1। किसी भी तरह से 1 है, लेकिन हम यूजुअली ज्यादातर +1 -1 ही होता है, डिवाइड या कॉमन लेकिन नहीं होता है, कम होते हैं क्वेश्चन लेकिन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन ऑल ऑफ देम, सबके अंदर दिस एंड एंड दिस एंड हैज टू बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट वन प्लेस वी आर हैविंग एन एंड अदर प्लेस आई एम हैविंग एन स्क्वायर, तो रहेगा तो वही 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में, बट एन आर डिफरेंट। तो दिस एन शुड बी इन रेसिप्रोकल एंड दे शुड बी द सेम। ठीक है, अब ज्यादातर टाइम जो है दोनों एन जो होंगे सेम नहीं होंगे। In most of the question, they will not be the same. I will make them same, and we can apply the formula later on. Manipulate कर लेंगे, दोनों n को same करा देंगे। Got it? Both the ends should be in the reciprocal and they should be the same. बस, that's all. Clear? Yes, sir. हाँ चलिए, अभी समझ में आ जाएगा। अब सेम कराना है तो उसके लिए जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग कराया जाएगा भाई। उसको तो कौन सा मैनिपुलेशन देना है, कैसा मैनिपुलेशन देना है, तो मेक देम सेम है, वो अभी करा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, वी हैव, ओके, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही है, फालतू में दे दिया यहाँ पे मैंने, फालतू में दे दिया। लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 1, वी हैव 1 + sin πx होल पावर cot of πx। पहली बात, we need to decide in which form it is। if we put x to be 1, I am getting 1 + sin pi, sin pi is 0, so basically 1 + 0 power infinity, or basically 1 power infinity form, so we can apply the binomial formula। So just wait a minute, it is given in the formula form, no need to do many x tending to 1, 1 + sin of pi x। Okay, as I told you, in the power term I need the reciprocal of sin pi x। Okay, so I will write that is 1 upon sin of pi x। Both the ends should be same and they should be reciprocal। In the power it was given cot pi x, I have written 1 upon sin pi x, so basically cos pi x is left। Now this part is in the formula, that is e power 1। I am going to write it to be e power 1। Just a minute, I can write that is e power 1। In the power term we have the term cos pi x। If I put x to be 1, cos pi is -1, so basically my answer is e power -1। Got it? सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. चलिए ठीक है, अभी छोटा क्वेश्चन इसीलिए कराया, जानबूझ के कराया, छोटा वाला क्वेश्चन कराया है, सो दैट यू आर कंफर्टेबल। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, वी हैव लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0, tan of pi/4 plus x whole power 1/x। we have this question। अब पहली बात तो ये है कि किस फॉर्म में, पहले वो देख लेते हैं। If I put x to be 0, I am getting tan pi/4, that is 1 power infinity form। Okay,
If it is in the 1 power infinity form, तो rationalization factorization वो सारे methods को नहीं लगने वाला है. And we need to apply binomial formula. But in the binomial formula, I need a term 1. एक term तो 1 होना है. Otherwise, we cannot proceed. But no need to worry. I will get it very easily. I can say that is limits extending to 0. Tan pi by 4 plus x, apply tan a plus b formula. That is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So I'm getting it to be 1 plus tan x divided by 1 minus tan x whole power 1 by x. Okay. Again, I'm facing an issue that I'm not having 1 plus something. I'm not getting 1. But I need it. So not a problem. Not a problem. It's very simple. I can write it to be limits x tending to 0. Blindly just write 1. Okay, do manipulation. We have 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Basically, I'm putting a line. I will write 1 minus tan x. I will write something here, either plus sign or minus sign. Okay, let's see what we need. If I cross multiply, I'm getting 1 minus tan x. So in the numerator, I will get 1 minus tan x, but it was given 1 plus tan x. So I can write it to be 1 plus 2 tan x. Can we write this way? The bracket term? Yes, sir. नो प्रॉब्लम. या तो दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, वो गलत चीजें होती हैं, वो सब नहीं बताना चाहिए, करना नहीं चाहिए. ये 1 प्लस tan x था, यू राइट टू बी 1 माइनस tan x प्लस 2 tan x. तो tan x की जगह माइनस tan x प्लस 2 tan x रख दीजिए. 1 माइनस tan x और नीचे 1 माइनस tan x कैंसिल होकर 1 दे देगा. आफ्टर दैट 2 tan x इज लेफ्ट. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम. No, sir. हाँ, इट्स पावर 1 बाई एक्स है. ये जो अभी बताया ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन करके या स्प्लिट करके इसको इंटीग्रेशन में और ये सब चीजें बहुत होता है ना, तो मालूम नहीं होगा, बहुत करा जाता है, पूरी मैथ्स में ही रहता है. बट एनीवे, आई हैव गॉट 1. आफ्टर दैट e पावर a इज फॉर्मूला, a is 2, नो नीड टू टच इट. इसको टच नहीं करिए, नहीं तो अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ऊपर भी हमें 2 लाना पड़ेगा, वो सब छोड़िए. We have this term tan x upon 1 minus tan x. I need the reciprocal of this term so that we can apply the binomial formula. Okay, बता रहा हूँ, just a minute. So I am going to write limits extending to 0, 1 plus 2 tan x divided by 1 minus tan x. I need its reciprocal blindly. बगैर कुछ सोचे समझे लिख दीजिए. बगैर सोचे समझे लिख दीजिए, बाकी मैनिपुलेट कर देंगे. 1 minus tan x upon tan x, just write it. Don't think anything. Now we need to do manipulation. In the power, it was given 1 by x. So I will have to write tan x divided by 1 minus tan x, and 1 by x is left. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है. Now I have got the answer. I am writing directly. Directly लिखने जा रहा हूँ. इतना पार्ट तो फॉर्मूला बन गया. It will be e की पावर a is to e power 2. In the power term, we are observing a term tan x by x. It will become 1. Now I'm putting the values. I'm showing you. So I'm getting e power 2. Entire term is into the power. Tan x by x is 1. After that, 1 minus tan x. Tan x is 0. Okay. X is 0. Tan 0. Tan 0 is 0. So I am getting e power 2. That is my answer. Clear? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ू. ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है, इसको भी करा देना हो. ये भी क्वेश्चन है. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. अच्छा, चलिए इसको करा दे रहा हूँ. इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ. वी आर हैविंग लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0. हाँ, मैं नहीं करूंगा, आप करिएगा. है, आप करिए. सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. वी हैव 1 प्लस tan x divided by 1 plus sin x. It's very simple question. Whole power 1 upon sin x. Okay, let's see in which kind it is. If I put x to be 0, tan 0 is 0, sin 0 is 0, basically 1 power infinity. 1 by 0, sin 0 is 0. It is 1 power infinity form. So basically we need
and we can apply the binomial formula, but I need one. So I'm just writing limits extending to 0. Just write 1 here, do manipulation. Do manipulation. 1 plus sin x term will be there. Do sum up manipulation. I'm not writing it. Do all these things yourself. Whatever the term I get here, do its reciprocal. Adjust do manipulation, then you will see the answer. चलिए इतना करिए, अपने आप दिखाई पड़ जाएगा. इतना लिखिए तो. जो मेथड बताया उसको फॉलो करिए, अपने आप ही आ जाएगा. हाँ, हो रहे हैं या प्रॉब्लम आ रहा है? जल्दी बोलिए. गौरी जैसे चिता. यस. हाँ, कोई. The answer is e to the power 0. Yes, you got the answer. You got the answer. Very good, very good. हाँ, एक चीज आइए बता देता हूँ. अभी ये बता देता हूँ. अभी बता देता हूँ. ठीक है. आई हैव मिस दैट. वो मिस नहीं होती कोई चीज ऐसी कभी. आई नेवर मिस एनीथिंग. ठीक है ना. अभी आप लोग को जल्दी जल्दी में 1 घंटे पढ़ाना है, इसलिए परेशानी आ रही है. और नहीं तो कोई भी ऐसी चीज आई नेवर मिस. कभी मिस नहीं होता. मैं जो पढ़ा दूंगा जेई के अंदर क्वेश्चन आएगा, उसी के अंदर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा. कभी नहीं आया है ना आएगा, ये बता दे रहा हूं. ठीक है. और आगे पीछे करके सारी चीजें आई जाती हैं. अगर मैंने कभी मिस कर दिया तो वो कहीं ना कहीं आगे बाद में आ ही जाएगा. दैट आई कीप रिमेंबर. तो मुझे ध्यान ही रहता है कि क्या चीज बताई है, क्या चीज नहीं बताई है. डोंट वरी, डोंट वरी. बट वट एवर द आंसर यू गॉट इज करेक्ट. एक मिनट बता रहा हूँ. अभी नाउ कम टू द फॉर्मूला. अभी क्वेश्चन तो बाद में प्रोसीड करूंगा, पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूँ. हाँ, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला. हाँ, ये फॉर्मूला बताया था. तो एक चीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, ऑप्शंस होंगे, सब कुछ चीजें होंगी. whenever we have 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ द ई. जो भी आंसर आएगा वो ई की टर्म्स में आएगा. ई की पावर 2, ई की पावर -5, ई की पावर -4/7. आई विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ द ई. ऑप्शन में जब भी आप देखोगे जो लिखा होगा ई की पावर में ऑप्शन लिखे होंगे. अदरवाइज when you see the option, you get the option in the terms of e की पावर something, then you can say that is in the binomial form. ठीक है. तो आंसर हमेशा e की पावर में आएगा. लेकिन एक केस ऐसा होगा जब कभी कभी e की पावर 0 आ जाए. ठीक है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि e की पावर 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा. अदरवाइज ऑलवेज वी विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ द e पावर समथिंग, प्लस माइनस, फ्रैक्शन, इंटीजर, नॉन इंटीजर, वट एवर. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी थी. इसका भी आंसर e की टर्म्स में लिखा होगा, e की पावर -8. इट्स आंसर आई एम गेटिंग e की पावर 0, दैट बिकम्स 1. यहाँ पे भी आंसर जो आया था e की पावर में आया था, e की पावर -1 आया था. ऑलवेज विल गेट इन द टर्म्स ऑफ e पावर समथिंग. नाउ कम टू द क्वेश्चन है. हाँ, वी आर दिस क्वेश्चन. जैसे अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ. I am having it to be limits extending to 0. I am writing 1. I am doing manipulation 1 plus sin x. Okay. It was given 1 plus tan x. If I do cross multiply, I am getting 1. But I am getting sin x. It was given tan x. So I can write that is tan x minus sin x. I will get the same term that was given, its whole power 1 upon sin x. Okay. Now, I have got 1. Next thing that we need to do, we need to write the term reciprocal terms.
tan x minus sin x divided by 1 plus sin x. Sin x. Just write blindly. It's a reciprocal. 1 plus sin x upon tan x minus sin x. Tan x minus sin x. Okay. Just a minute. Huh? Tan x minus sin x. Okay. So basically, I will have to write tan x minus sin x here. Okay. But in the question, it was given sin x also. So divided by sin x. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए एक लाइन लिख के बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा हूँ. इतना पार्ट तो मेरे पास फॉर्मूले में आ गया, इसकी वैल्यू e की पावर 1 आ जाएगी, बाद में लिख दूंगा. सो आई एम राइटिंग इट टू बी लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0 1 plus tan x minus sin x. ये टर्म लंबी होती है, बड़ी होती है, बट टू एक्सप्लेनेशन आई नीड टू राइट, है ना, उसको लिखना पड़ेगा. जी मत लिखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ पे गोला मार दीजिए, गोला मार के यहाँ पे प्रोसीड कर जाइए. जी मत लिखिए, डोंट वेस्ट टाइम देयर है, या इसकी वैल्यू सीधे सीधे e की पावर 1 लिख दीजिए. 1 plus sin x divided by tan x minus sin x. Okay. Now the term, the second term here, tan x minus sin x by s, it is 0 by 0 form. So sin tan x I can write, that is sin by cos, I can take sin x common. If I take sin x common, in denominator sin x is there, so it gets cancelled. It gets cancelled, I am left with 1 upon cos x minus 1 or sec x minus 1. 1 upon cos x minus 1 divided by 1. Okay, I am showing sin x. Okay, I am showing. Show कर दे रहा हूँ. Sin x. Now this term gets cancelled. Now, if I put x to be 0, then just a minute. There is 1 upon cos 0, 1. 1 by 1. 1 minus 1, that is 0. So its value is 0. It is not 0 by 0. And the denominator sin x got cancelled. So I am just writing its answer, that is 1 e power 1, the first term, multiplied by, I am left with 0. And I am getting e power 0, that is 1. बात फॉलो कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes. No, sir. छोटा क्वेश्चन है, वो छोटा क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है, बट गुड वन है. आंसर e की पावर 0 बहुत कम आएगा इन रेयर क्वेश्चन, बट इट मे कम. ओके, अब एक काम करते हैं, वी आर स्टॉपिंग नाउ. अभी एक नेक्स्ट क्लास हमें और देनी पड़ेगी, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, मेनी थिंग्स हैं. बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ द साइन एक्स कॉस एक्स है, और लॉजिकल स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन अभी पूरे मिस हो रहे हैं जो हमारे पास लॉजिकल होंगे, जिसके अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स एक्सपेंशन करने होते हैं, वो क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाद में आता है. और सम क्वेश्चन दैट वी नीड, दैट वी कैन डू विद ओनली एल हॉस्पिटल, तो उस टाइप के क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना? क्लियर? Yes. So Yes, all of you please, all of you please log out. We'll continue tomorrow. Am I right? चलिए, जो क्वेश्चन बच गया उसको कर लीजिएगा अपने आप. ठीक है? Thank क्लियर? you, sir. ओके, हाँ, प्लीज लॉग आउट, प्लीज लॉग आउट.